Hello everyone. Now today's topic is exothermic and endothermic reactions. Okay. Now depending that whether energy is released or energy is absorbed. ठीक है. These are classified into two types. Reactions are of two types: exothermic and endothermic reactions. So that reactions in which energy is released. When reactants are reacting, products are formed and then some amount of energy is released. That reactions are known as exothermic reactions. Okay. And that reactions which cannot proceed till they are not given the energy, means when reactants absorb the heat energy, only then reaction proceeds and products are formed. That reactions are known as endothermic reactions. जो exothermic reactions है, in that reactions heat energy is released, and in endothermic reactions heat energy is absorbed. ठीक है. Now here reactants are reacted, products are formed along with evolution of heat. एनर्जी भी रिलीज हो रही है साथ में. इट मीन्स कि जो रिएक्टेंट्स है वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं. सो द इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स. जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट तब तक रिएक्ट नहीं करते जब तक दे आर नॉट गिवन द हीट एनर्जी. मीन्स हियर द इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट्स इज लेस एंड द इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर. यहाँ पर प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी ज़्यादा है, ठीक है ना. यहाँ पर रिएक्टेंट्स के पास ज़्यादा एनर्जी है, ओनली देन दे आर रिलीजिंग दैट एनर्जी. इट मीन्स इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स इज मोर एंड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स इज लेस. सो जो चेंज इन इंथैल्पी, हाउ वी राइट द चेंज इन इंथैल्पी? इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. एंड हियर द इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर. रिएक्टेंट की इंथैल्पी ज़्यादा है एंड रिएक्टेंट्स इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज विद नेगेटिव साइन. सो द फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो चेंज होगा इंथैल्पी में, दैट इज बीइंग शोन बाय द नेगेटिव चार्ज. दैट्स व्हाई आई हैड रिटन दैट दिस रिलीज ऑफ एनर्जी इज बीइंग शोन विद द नेगेटिव चार्ज. ठीक है. और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, यहाँ पर रिएक्टेंट्स दे डोंट रिएक्ट टिल दे आर नॉट गिवन द एनर्जी. मीन्स द एनर्जी विद रिएक्टेंट साइड इज लेस. ठीक है. तो जो एनर्जी प्रोडक्ट्स के पास ज़्यादा है. ठीक है. और हम डेल्टा एच जो चेंज इन इंथैल्पी है, वी राइट दैट इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. एंड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स इज मोर ओवर हियर, सो द चेंज इन इंथैल्पी इज विद पॉजिटिव साइन. मीन्स जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, देयर द हीट रिलीज्ड इज बीइंग shown with the negative sign. When heat energy is absorbed, that is being shown with the positive sign. So we can understand it by these graphs which are being here, right? So towards this side we had taken enthalpy and this side we have taken the reaction path, that how the reaction is proceeding. Okay. So when the enthalpy of products is less, in enthalpy of reactants is more. ठीक है. Means it is exothermic reaction. So for the exothermic reaction we show this change in enthalpy this way. ठीक है ना. Here in the lower side we write the enthalpy of products. Here we in the upper side we write enthalpy of the reactant, because in exothermic reaction enthalpy of reactants is more. Okay. So reactants release the energy, ठीक है, and products are formed. And for the endothermic reaction, how it is being shown here? So as reactants they have less energy and products have more energy. So enthalpy of reaction is written in the lower side and enthalpy of the products is written in the upper side. So reactants react by taking the energy and then products are formed. So this is the change in enthalpy which is shown by enthalpy of product minus enthalpy of reactant, and this is of positive sign. And when exothermic reaction takes place, then the change in energy is of negative sign. Right? Means for exothermic reaction, change in enthalpy or change in internal energy is of negative sign, and for endothermic reaction these two are of positive sign. Right? Now the next topic is heat capacity. Now what is heat capacity? Okay, if we have taken any substance, right, and we are heating that substance, ठीक है ना, हम कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं उसको गर्म कर रहे हैं, then if this substance is at a temperature of imagine 26 degrees Celsius, right, then how much amount of heat we had supplied
to this substance so that we can raise its temperature from 26 to 27 degree Celsius. मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट वी आर सप्लाइंग, दैट वी आर गिविंग, दैट इज हीट कैपेसिटी. किसी भी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, ठीक है ना, मीन्स इसका अगर ओरिजिनल टेम्परेचर इफ इट्स 26, तब हम और उसको फिर कितनी अमाउंट ऑफ हीट हम उसको सप्लाई कर रहे हैं ताकि उसका टेम्परेचर इट गेट रेज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो दैट इज द हीट कैपेसिटी. Now what happens in some cases system absorbs the heat, ठीक है ना, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है. बट इन सम केसेस सिस्टम रिलीजेज द हीट एंड इट्स टेम्परेचर फॉल्स डाउन. मीन्स किसी सिस्टम में टेम्परेचर इंक्रीज भी होता है और किसी में टेम्परेचर डिक्रीज भी होता है. नाउ दैट डिपेंड्स दैट वेदर हीट इज एब्जॉर्ब्ड और हीट इज रिलीज्ड. सो दिस increase or decrease of temperature, whether temperature is increasing or decreasing, it is proportional to the amount of heat transfer. उसको कितनी heat transfer की है, it is proportional to the increase or decrease of temperature. Heat transfer is Q and change increase or decrease हो रहा जो temperature में, that is delta T. And then this proportionality constant is being removed by the term coefficient. है ना. सो हियर Q इक्वल्स टू कोफिशिएंट इनटू लाइक मीन्स अदरवाइज जब हमने जो चार्ल्स लॉ या फिर बोल्स लॉ किए थे, एट दैट टाइम व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन वी ऐड सम कांस्टेंट ओवर देयर, राइट. सो दैट्स व्हाई हियर वी हैव रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन एंड वी हैव रिटन दिस कांस्टेंट ओवर दिस. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कोफिशिएंट, ये जो हमने कोफिशिएंट प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते वक्त यूज़ किया है यहाँ पे, right. So that magnitude of coefficient, it depends upon what? It depends upon the size of the system, what is the composition of the system, and then the nature of the system. Coefficient depends upon these 3 terms: size, composition and nature of the system. So coefficient is written by C. So heat equals to C coefficient into change in temperature, and this C over here is हीट कैपेसिटी. जो कोफिशिएंट कांस्टेंट हमने यूज़ किया यहाँ पर C, दैट इज हीट कैपेसिटी. मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो एज हीट इक्वल्स टू C इंटू डेल्टा टी, यहाँ पे हमारे पास Q इक्वल्स टू C इज हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी. सो C हीट कैपेसिटी विल बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज Q हीट अपॉन डेल्टा टी. ठीक है. इफ द सिस्टम इज एब्जॉर्बिंग द हीट, अगर सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज. तब हम C को कैसे लिखेंगे, हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन राइज इन टेम्परेचर. इफ द सिस्टम हैज रिलीज्ड द हीट, ठीक है ना, तब टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा. सो हीट रिलीज्ड अपॉन डिक्रीज इन टेम्परेचर. सो देन दैट विल बी यूज्ड फॉर हीट कैपेसिटी. ओके, नाउ डिपेंडिंग दैट जो हमारे पास यहाँ पर हीट है, यूनिट फॉर दैट इज जूल. फॉर चेंज इन टेम्परेचर इट कैन बी केल्विन, इट कैन बी डिग्री सेल्सियस. सो अकॉर्डिंगली द यूनिट ऑफ दिस हीट कैपेसिटी इट कैन बी जूल पर केल्विन और जूल पर डिग्री सेल्सियस. जूल पर केल्विन और जूल पर डिग्री सेल्सियस, दीज आर द यूनिट्स ऑफ द हीट कैपेसिटी डिपेंडिंग व्हाट इज द यूनिट फॉर change in temperature. Heat capacity is of 2 types: heat capacity at constant volume and heat capacity at constant pressure. So heat capacity symbol है उसका C, at constant volume then V will be written in its subscript. Heat capacity symbol is C, at constant pressure then subscript used will be P. So accordingly if we have to write heat at constant volume then it will be CV into delta T, because Q equals to C into delta T. So if heat capacity is at constant volume then heat can be written as CV into delta T, and if the process is being taking place at constant pressure then Q heat will be equal to Cp into delta T. Okay, now I already told you that this heat capacity depends upon nature, size and composition of the system.
ठीक है ना। अब अगर जो हमारे पास सिस्टम है एंड द अमाउंट ऑफ द सिस्टम इज़ वेरी लार्ज, ठीक है ना, मीन्स अगर उसकी क्वांटिटी वहाँ पे जो हमने अमाउंट यूज़ किया सैम्पल दैट्स स्मॉल, मीन्स ईजिली वी कैन गो फॉर दैट rise of 1 degree Celsius, right? But if the sample which we have used, its amount is very much large, then heat to be supplied to raise the temperature by 1 degree Celsius, that heat required will be very much, ठीक है ना. So more heat is required if we want to raise the temperature of the large amount of the sample की अमाउंट अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे अगर हमने 1 degree Celsius राइज करना है टेम्परेचर, then more heat is required in comparison to then the heat required for the small amount of sample, right? Means जितनी amount sample की ज़्यादा होगी greater will be the heat capacity. So at that time we don't use simple term heat capacity. At that time we use the terms like specific heat capacity or molar heat capacity, right? जो सिंपल हीट कैपेसिटी थी दैट वॉज दैट वी वॉन्ट टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 degree Celsius ऑफ द सिस्टम. एट दैट टाइम अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस वॉज नॉट मैंशनड. बट वट इज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? हियर वी हैव टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 degree Celsius ओनली, बट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट वी हैड टेकन इज 1 ग्राम. मीन्स 1 ग्राम सब्सटेंस लिया और उसी का हमने जो 1 degree Celsius टेम्परेचर राइज करना है, एट दैट टाइम we will measure the heat capacity that is known as specific heat capacity, right? So this is the heat capacity required to raise the temperature of 1 gram of the substance. ऐसे नहीं भी जितनी मर्जी amount of substance ले रहे हो उसका हम 1 degree Celsius राइज करना है, ठीक है ना. So here the amount of the substance is also being mentioned, that is also being made particular over here, that of 1 gram substance only we have to raise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. At that time the heat is required, that is specific heat capacity. So specific heat capacity is written as heat absorbed upon rise in temperature multiplied by the mass of the sample in gram, right? So then the unit will change joule per Kelvin per gram. And if the amount of the substance of which we have to raise the temperature by 1 degree Celsius is 1 mole, अगर हमने 1 मोल सब्सटेंस की अमाउंट ली और उसी का टेम्परेचर बाय 1 degree Celsius राइज करना है, देन दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी बिकॉज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट वी हैव टेकन इज इन मोल्स. So the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of the substance by 1 degree Celsius, that is the molar heat capacity, Cm, equals to C heat capacity upon the number of moles. जितनी heat capacity upon number of moles, it will give us molar heat capacity, right? So unit for it will be joule per Kelvin per mole or joule per degree Celsius per mole, right? Now we had read two terms, that heat capacity at constant pressure and heat capacity at constant volume. What is the relation between these two terms? It is important one. Now at constant volume we know that QV equals to CV into delta T, and at constant pressure heat is Cp into delta T. And heat at constant volume is change in internal energy, and heat at constant pressure is change in enthalpy, that is delta H. Okay, we know the formula of change in enthalpy, which is delta U plus P delta V. And here this we had considered for ideal gas, means, and the amount that we had taken is 1 mole. So if the ideal gas equation otherwise is PV equals to nRT, and for 1 mole it will be PV equals to RT because we have substituted N with 1. So for PV here we will write RT. PV को हम change कर देंगे, substitute कर देंगे PV की value. And R is constant, so R will get outside, and here we'll get delta T, right? So delta U changes to del U plus R delta T. And here we have the value of delta H, right? And the last page that I had shown you, the value of the delta H is Cp delta T, and value of delta U is Cv delta T, right? So here we'll put delta H to be Cp delta T, and delta U equals to Cv delta T, and plus R delta T is already there. So delta T is common among all, so it will get cancel out, and we are left with Cp equals to Cv plus R. Okay, taking Cv to another side,
Cp minus Cv equals to R, means difference between these two is R, which is a gas constant. This is for 1 mole of gas. If we take n moles of the ideal gas, then it will be Cp minus Cv equals to nR. Here we know that Cp plus R, then we'll get the value equal to Cp. So from here we can guess that Cp is greater than Cv, क्योंकि अगर हम Cv की वैल्यू में फर्दर R की वैल्यू को ऐड करेंगे तब Cv की वैल्यू जो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल गेट इक्वल टू Cp. इट मीन्स दैट Cp इज ग्रेटर देन Cv. Okay, so this shows that Cp is greater than Cv. Now next is the measurement of the internal energy and enthalpy of the reaction. How these are measured? Now there are different methods to measure this enthalpy of the reaction, right? And the commonly the method that we used for the experimental determination of the enthalpy is calorimeter. Here is the word calorie, another is the meter. Calorie means heat and meter means to measure. So that apparatus which measures the heat change, that is calorimeter. Now here we have simple type of calorimeter, right, which we use to measure the heat changes which are taking place when any of the chemical reaction is taking place in solutions. ठीक है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम जो हीट चेंज हो रहा है उसको मेजर करने के लिए द apparatus that we are using is calorimeter. Okay, and this apparatus it consists of, so this calorimeter consists of water bath having insulated walls. ठीक है ना, this is the apparatus of calorimeter, right, and this is the outer walls which are insulated, means there will be no loss of heat. So this outer walls of the calorimeter, these are the insulated one. Okay, this outer boundary is insulated. And then there is another vessel in which a reaction is carried. It is known as reaction chamber. Okay, na? This is another chamber here in which reaction is to be carried out, and then we have placed this chamber in this the insulated outer vessel. जो हमारे पास insulated outer vessel है, in this we had placed the chamber in which reaction is to take place. Okay, so then next is that the reaction chamber is immersed in the water bath, and the water bath is provided with a stirrer. Sorry, this is the outer insulated vessel and this inner one is the water bath, and in this water bath here is the reaction chamber in which reaction takes place. Okay, this is the outer insulated vessel. ये जो हमारे पास outer boundary है जो show रखी है यहाँ पर. Okay, this is the outer insulated vessel and this is the water bath in which water is being added, and then this water bath, here is the reaction chamber where reaction will take place, and here this water bath, ये जो हमारे पास water bath है, it is being used along with a stirrer and a thermometer. Okay, so here in this chamber reactions will take place. ठीक है ना, जो इस ये chamber है. Okay, so this is the insulated vessel, this is the water bath filled with water, and in the water bath thermometer and stirrer are added, and this is the chamber in which reaction will take place. And the reactions which are taking place in open atmosphere, that reactions are taking place at constant pressure, right, because the reactions which are taking place in open atmosphere, that are taking place at constant pressure because the atmospheric pressure is constant. So calorimeters are also open to atmosphere, so the reactions that will take place in the calorimeter will be at constant pressure. So now how these calorimeters work, how we measure the heat changes using these calorimeters. Okay, so what we will do, there are steps to find the heat capacity using this calorimeter. So firstly what we'll do, we'll take known, means हमने उतनी अमाउंट ऑफ वाटर लेनी है दैट वी आर नोन दैट इट इज़ दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर. अ नोन वेट ऑफ वाटर इज टेकन एट टेम्परेचर T1, मीन्स जो वाटर बाथ है उसमें हमने जो वाटर ऐड किया है, वी नो द वेट ऑफ, मीन्स जो अमाउंट है उस वाटर की एंड द टेम्परेचर एट विच इट इज़ टेकन, वी नो बोथ द थिंग्स. देन W2 ग्राम ऑफ हॉट वाटर इज टेकन एट टेम्परेचर T2. फिर हमने गर्म पानी लिया, उसका भी वेट और टेम्परेचर, वी आर नोन अबाउट दिस टू थिंग्स, एंड देन दैट इज एडेड टू दिस वाटर बाथ. ठीक है, इसमें ऐड कर दिया.
देन वी विल स्टर द मिक्सचर. जो इसमें हम क्या करेंगे, जो मिक्सचर है उसको कॉन्टीन्यूसली स्टर करते रहेंगे ताकि जो उस पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो सेम रहे. बिकॉज हमने पहले T1 टेम्परेचर पे जो वाटर है उसमें ऐड किया, फिर वाटर लिया वो T2 टेम्परेचर पर था, ठीक है ना. फिर हमने उन दोनों को अच्छे से स्टर किया सो दैट द टेम्परेचर कम्स आउट टू बी यूनिफॉर्म, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हो जाए. और फिर जो वहाँ पे टेम्परेचर आएगा उसको हमने मान लिया दैट इट इज़ T3. Okay, so after doing this we will find the heat capacity of the calorimeter. Then the heat capacity of the calorimeter will be equals to, उसका क्या फॉर्मूला आएगा, W2 मीन्स जो हमने सेकेंड टाइम पे जो गर्म पानी जो हॉट वाटर दैट वी हैव एडेड इनटू T2 minus T3. T2 is the temperature of the hot water, T3 is the temperature that gets constant after stirring. And here we will take T3 minus T1, and in the numerator after solving this we will multiply it by W1. So this will give us the heat capacity of the calorimeter. Okay, now what we will do next is that then the chamber carrying the known weight. अभी हम हमारे पास जो रिएक्शन चैम्बर है उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, रिएक्टेंट्स. जो रिएक्टेंट्स हमने जिनकी रिएक्शन करवानी है then that reactants are being added here in this reaction chamber. Right, means if the reaction that is being taking place, if that reaction releases the energy, अगर ये जो चैम्बर है इसमें जो रिएक्शन हो रही है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वो एनर्जी रिलीज करेगी जिसके कारण टेम्परेचर ऑफ द वाटर बाथ विल इंक्रीज. इफ द रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस हियर, अगर वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है देन मीन्स एंडोथर्मिक है तो वो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, इट विल टेक द हीट फ्रॉम द वाटर बाथ. तब वाटर बाथ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ओके, सो सबसे पहले हमने हीट कैपेसिटी फाइंड की. देन आफ्टर दैट वी हैड प्लेस द रिएक्टेंट्स इन द चैम्बर. इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक तो वाटर बाथ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है देन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बाथ विल डिक्रीज. सो फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर which is delta T. Right, so we had find the heat capacity, we had find the change in temperature. So now heat changes will be equal to heat capacity multiplied by the change in temperature multiplied by specific heat of water. Specific heat of water means when we take 1 gram of water and raise its temperature by 1 degree Celsius, at that time the heat change is specific heat of water. So because here we had taken जो हमने वाटर बाथ में पानी ले रखा है ना, so that's why here we will take the specific heat of that substance only. So then it will give us the heat change. So this is the simple calorimeter which we'll use to measure the heat capacity. Right, now these simple calorimeters are now further modified. Right, and there are different forms of the calorimeter that we use to find the heat capacity and heat changes. Okay, so now one of the modified form of the calorimeter is bomb calorimeter. Right, it is bomb calorimeter, and this is used to determine the heat of combustion. That means heat of combustion which occurs when oxygen is supplied. Right, so here this is the whole apparatus of the bomb calorimeter. I'll explain you. Here again we had used insulated water bath. Okay, so here this we had used again insulated water bath, means this is then filled with water, known quantity of water, means हमने इसमें जो water लिया that its quantity is known to us. Right, and it is then fitted with stirrer and a thermometer. And then this insulated water bath it consists of a bomb. ठीक है ना, ये जो बॉम्ब है इसमें क्या यूज़ किया हमने, here oxygen is being kept at pressure, means because the oxygen combustion reactions takes place in the presence of oxygen, so here we had taken known quantity of the oxygen under pressure. And here this is the cup, and in this cup we had taken the substance whose reaction is to take place, means sample we had taken in this cup, in this platinum cup. This cup in which we had placed the sample is made up of platinum. Okay, and then the sample in which we had placed the platinum, over it there are 2 firing leads. Okay, and these 2 firing leads they are connected to each other through the platinum wire which are dipping in the platinum cup
सी मीन्स ये जो हमारे पास दोनों फायरिंग लीड्स है इसको किससे कनेक्ट कर रखा है, उस कप से कनेक्ट कर रखा है जिस कप में हमने क्या रखा है, सैंपल. Okay, and then this bomb, it further consists of the oxygen gas because combustion reaction will take place in the presence of oxygen. So for that we had taken an oxygen inlet through which oxygen is being supplied for the carrying out of the reaction. And here is the thermometer, here is the stirrer, and here we had taken the water in the insulated water bath. So this calorimeter, it gives us heat at constant volume, CV. राइट. सो हियर वी हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक चैम्बर, जो बॉम्ब है यहाँ पे, ठीक है ना, वो किस चीज़ का बना हो, मेटल. विच मेटल इट इज़ मेड अप ऑफ, स्टील. वाई इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील, सो दैट इट कैन विदस्टैंड विद द हाई प्रेशर. मीन्स जब हमारे पास जो रिएक्शन कैरी आउट होगी, ठीक है, जो गैसेज रिलीज होगी, ठीक है ना, सो दैट द apparatus कैन विदस्टैंड दैट प्रेशर ऑफ द गैसेज. सो फॉर दैट वी हैड taken the chamber made up of steel, right? And two firing leads are there which are further connected to the platinum cup. In the cup we had placed the sample, right? So then how it works? So small known weight of the substance, जिस सैंपल को, जिस सब्सटेंस को हमने स्टडी करना है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसको हमने यहाँ पे इस प्लेटिनम कप में रख दिया, राइट? सो देन बॉम्ब इज फिल्ड विद ऑक्सीजन. मीन्स बॉम्ब है जो, उसमें ऑक्सीजन गैस, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड एट द प्रेशर ऑफ 20 to 25 एटमॉस्फेयर. So this bomb is then placed in the water bath, insulated water bath, which is further fixed with stirrer and thermometer. Then firstly we'll note the initial temperature of the water. पानी का जो वाटर बाथ है उसमें जो वाटर का टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर क्या है वो नोट करेंगे, ठीक है. एंड देन जो रिएक्शन है, यहाँ पर जो रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी, ठीक है ना, विल सप्लाई दम इलेक्ट्रिसिटी, हम करंट जो को पास करेंगे प्लेटिनम वायर्स के थ्रू, ठीक है, और फिर यहाँ पर रिएक्शन होगी एंड देन इट विल रिलीज some energy. जो एनर्जी रिलीज होगी, then the temperature of the water will get increase, right? So from there we can find the change in temperature. Okay, so heat produced, जो heat change होगा during this combustion reaction, how we'll find? The same formula, heat capacity of the calorimeter, ठीक है, जिसको हम सिंपल by using water फाइंड करते हैं. देन जो चेंज इन टेम्परेचर होगा, क्योंकि जब जो एनर्जी, जो रिएक्शन होगी उसमें अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा. फ्रॉम दैट वी कैन फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर एंड देन स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर. ओके, इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर इंक्लूडिंग वाटर इज Z, अगर हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी आती है, Z, देन हीट कैपेसिटी विल बी Z डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर एंड देन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, द गिवन अमाउंट ऑफ वाटर जो हमारे पास है अपॉन इट्स मोलर मास. सो देन दैट विल गिव अस द स्पेसिफिक हीट ऑफ कंबस्टन. सो दीज आर द मेथड्स, दीज आर द डिफरेंट apparatus which we use to measure the heat changes. Calorimeter itself means, calorie means heat, meter means to measure the heat change. So the heat produced or during any of the reaction which we are carrying out, so that we can find using this calorimeter. Change in enthalpy or change in internal energy can be found. Okay, thank you.